Hello. 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 Hello, ma'am. Hello, beta. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. Hello, Moise. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? ठीक मैम, आप ठीक? अल्लाह का शुक्र है. Shamsher, how are you? I'm fine. आपका क्या हाल है मैम? I'm fine, thank you. Hadi. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू. और कौन आया है? हारिस. हेलो हारिस. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? ठीक ठाक मैम. ओके. हेलो जमरान. जमरान. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? मैम फाइन. मैम आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू. और कौन आया? लेट्स सी. हेलो शज़ा. Hello, ma'am. हाउ आर यू शज़ा? I'm good. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू. हेलो रबिया. Hello, ma'am. क्या हाल है रबिया? मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू. ओके, लेट्स see who's joining again. Okay, this is Mohsin. मैम हमारी कितनी क्लासेस रह गई हैं? इतनी होनी चाहिए. हमारा टारगेट है कि हमने ईद से पहले खत्म करना है, तो जुमेरात तक. ठीक है? ओके मैम. अच्छा, लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, देख लिया आपने? ये किधर मैम? वो मूडल पे? हाँ जी, मूडल पे. और कहाँ करना था? नहीं मैम, वो ईमेल पे भी अगर मैंने आपको कहा था कि अगर कर देते ईमेल वीडियो नहीं से तो करूंगी, वो मूडल पे करूंगी. ठीक है? मैम वो ठीक है, मतलब कि मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रही हैं. हाँ. लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आप वो पिक्चर जिस तरह आपने एक दिन हाँ, वो पहले किया था पिक्चर ना, भी, हाँ वो भी मैं मूडल पे डाल दूंगी. ठीक है? चले वो कर देना. फिर पिक्चर से नोट करना आसान होता है, ईमेल से वो जो वीडियो से नोट करना ना मुश्किल होता है. ठीक है, मैं वो कर दूंगी. अभी मैंने रिकॉर्डिंग्स को अपलोड किया, फिर मैं वो दूसरे इमेजेस को भी कर दूंगी. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम. You're welcome. अच्छा, जोहेब नहीं आया है. तहरीम is present. Yes, ma'am. Present. Good. Rabia present. Maryam no. Shaza yes present. बोलो ना. Hadi. Yes ma'am. Good. Usman is absent. Haris present. Yes ma'am. Good. Dirdana present. Yes, ma'am. Good. Moise present. Yes. Okay. Mohsen. Yes ma'am. Okay. Zumran. प्रेजेंट मैम. Okay. Shamjar Present ma'am. and Naseem Ahmed. Yes ma'am. क्या हाल है नसीम? I'm fine ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Atika is absent, right? Okay, चलो. मैम उसका इंटरनेट नहीं चल रहा. अच्छा. Okay, fine.
हम क्या पढ़ रहे थे? मैम परटर्बेशंस पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली टाइम की। ठीक है, गुड। सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द मेन टॉपिक इज पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है ना? पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर हमने we've talked about two types, ठीक है ना? The time dependent and time independent, right? अच्छा, then last time we started with, हमने क्या शुरू किया था? Yes, the first order perturbation, ठीक है? We talked about the first order perturbation. And we talked about, within this we talked about first order energy correction, which is En1. And then we talked about first order correction to the eigenfunction. Psi n1. So this was what I worked with last time. ये मैंने upload कर दिया हुआ है, ठीक है? And now we are going to talk about the second order perturbation. Okay, so I'm going to go to the next page. Okay, so now we're going to talk about second order perturbation and correction to the energy En2. So please notice that in the previous case, we were doing the correction for En1. So it's the first order energy correction. Now we are doing the correction for En2, which is the second order. ठीक है ना? So I can also try to show you an image here. So this is, no, not this one. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे ये शेयर करती हूँ this. Okay, you can see here, ठीक है ना? आपको नजर आ रहा है ना? So this was the time independent perturbation. Here we wrote the equation, and then we introduced a small perturbation, and this is the unperturbed state. So you remember the superscript 0 and 1, and lambda was the small perturbation. ठीक है ना? Okay, ये okay. उसके बाद we worked on this. एक minute. Yes. हाँ. Okay, यहाँ पे you can see that En is equal to the sum of the different order energy correction. So you can see it's a sum of En0 plus En1
with the superscript 1 and en to the superscript 2. So last time we found en to the superscript 1, and this time we are finding en to the superscript 2. So corresponding to these values of en, we also have the wave function psi n. So you have psi n with the superscript 0, psi n with the superscript 1, psi n with the superscript 2, and so on. Okay? So now you can understand why we are doing this. So last time we worked on the first order, which was with the superscript 1, and this time we are working with the second order, which is the superscript 0. Okay? मैम आपने क्वेश्चन से इसमें 6 में ये जो पर्पल लैम्डा है मैम ये लगाना जरूरी है क्योंकि तो ये अनपर्टर्ब्ड है. एक मिनट 6 कहाँ गया? Let's see. मैम लास्ट स्लाइड. Here. मैंने उसको कहाँ कर दिया? Number 6. अच्छा, ये नजर आ रहा है? जी मैम नंबर 6 इक्वेशन हाँ पर्पल वाला लैम्डा. हाँ, मैम इसमें लैम्डा ये लगाना जरूरी है लगाना क्यों? जरूरी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए इसलिए मैंने डिफरेंट कलर में लगाया आपको. ठीक है ना? वरना इट मींस इक्वल टू 1. ठीक है ना? अनपर्टर्ब्ड स्टेट में देयर इज नो पर्टर्बेशन, सो ये इसलिए 0 है, तो 0 पावर हो तो इट इज इक्वल टू 1. ठीक हो गया? ओके. नाउ लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड. सो तो आपको ये भी याद है कि पिछली दफा we used some coefficients as well, so अब हम उसी से कंटिन्यू करेंगे, right? So since the coefficients of second order are in equation 13. Equation 13 is from the last class. Okay, so we can write that H0 psi n2 plus H1 psi n1 is equal to En0 psi n2 plus En1 psi n1 plus En2. मैम ये इक्वेशन 13 लिखे. 13 तेरा psi n0. मैं दोबारा लिख देती हूँ. ओके, so this is 3. अब ठीक है? Yes, Okay, ma'am. so this was equation number 13. ठीक है? So putting in it the value of psi n2 from equation 9. ये सब पिछले क्लासेस की इक्वेशंस हैं. ठीक है? मैम ये जो 13 इक्वेशन में जो लास्ट टर्म है ये En2 psi n0 है. हाँ जी. Okay, and corrected value of psi n1 from equation 8. So we can write sigma m and m superscript 2 h0 psi m0 plus sigma prime m cnm1 h1 psi m0.
Okay, so you can see each of them has a subscript and a superscript. Also, this M is a subscript. Okay, so we can write it more clearly. So here you have it. This is M. Okay, so, and this is equal to, oh my god, this is really long, so I'll try to write it here. Okay, just a moment. So this is equal to sigma M C N M superscript 2 E N 0 psi M 0 plus sigma M prime C N M 1 E N 1 and psi M 0 plus E N 2 psi N 0. We remember that, just a moment, okay. We remember that this term, this one, okay, is from the previous classes again. Here you have H0 psi M0 is equal to EM superscript 0 and psi M0. Okay. So can I go to the next page? नो Yes, मैम Mm-hmm. आदि आप लगता लिख नहीं रहे क्या? मैंने कहा आदि लगता लिख नहीं रहा इसलिए उसने कहा है मैं समझ रहा हूँ. हाँ जी, ठीक है. गुड आदि मैम बस ये लास्ट टर्म्स रह गई दो ठीक है. जब हो जाए मुझे बता देना. ओके मैम मैम कर दें रेस Okay. Right. So therefore, we have sigma M C and M2 into EM0 minus EN0 psi M0. This is equal to sigma M prime CNM1 into EN1 plus H1. This is psi M0 plus En2 psi N0. So this is equation number 17. So let us multiply this equation by psi n star and integrate over all space. So we get integral sigma m c n m to e m 0 minus e n 0 psi n star 0 psi m 0 and d tau.
So this is equal to integral sigma m prime psi m star 0 cnm 1 en 1 minus h 1, and this is into psi m 0 deta plus e plus e n2 integral psi n 0 and psi n star 0 the deta. Okay, so just like the argument in the first order, so similar to what we did in the first order, comma, the left hand side vanishes for all values of m. So you know for m is not equal to n, we have the orthogonality condition. And also we know that for m is equal to n, the energy bracket will be 0. Okay. So यहाँ पे we can see कि here n is not equal to m, so this factor will be 0. And also if m is equal to n, then the energy bracket will be 0. Okay. So now we will write the simplified expression. So can I go to the next page? Yes, ma'am. नहीं मैम अभी रुक जाए. अच्छा. यहाँ से क्या कर रहे हो? Okay. ठीक है. मैम अभी ये लास्ट लाइंस रह गई मेरी जो लिखी वाली ना बस. अच्छा. मैम ये क्या लिखा है? जस्ट लाइक द आर्गुमेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर और आगे क्या है? एंड क्या just like the argument in the first order, comma, फिर मैंने नीचे लिखा है left hand side LHS. ये चीज वो उसके अंदर है. हाँ जी. ओके ठीक है, एक मिनट. ठीक हो गया. नहीं मैम वो मैंने लिखी नहीं थी, एक मिनट से. चले आगे. मैम ये लास्ट लाइन बस रह गई. फॉर m इज इक्वल टू n. ओके.
m is equal to n मैम ये for m is equal to n क्या लिखे है एनर्जी ब्रैकेट हाँ वो 0 हो जाएगी, बराबर हो मैम जाएगी लिख ना, लो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। So therefore 0 is equal to m prime integral psi n 0 सॉरी ये 0 नीचे ऊपर लिखना था, ओके, so this is not here, so this is on the superscript, and c n m1 and e n1 psi m0 d tau minus integral sigma m prime psi n star zero and CNM1 H1 and psi m0 d tau plus En2. Okay. Now, in this case, you can see that the first term on the right hand side is 0 for all values of m. So we have for m is not equal to n, we have the orthogonality condition. And for m is equal to n, the coefficient. मैम ये जो प्लस n2 है ये ऊपर वाली टर्म के साथ है, ये जो इक्वेशन आपने मतलब कि लिखी इसके साथ ही आना हाँ नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ही इक्वेशन कर रही है, एक ही इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ओके मैम, दिस इज वन ओके मैम, so the coefficient CNN is equal to 0. So therefore En2 is equal to sigma m prime CM1 HNM1. So in this case HNM1 is equal to integral psi n star 0 H1 psi m0 d tau. So H and M, this is the value, it's a matrix element. So putting the value of CNM1 from equation 16, we get, मैम ये क्या लिखे मैट्रिक्स एलिमेंट, ये एक मैट्रिक्स एलिमेंट है ना, ओके, it can be represented as a matrix element as well, ठीक है ना। En2 is equal to
sigma m prime and h mn1 divided by en0 minus em0 into h nm1. अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं. अच्छा, I think it's okay, right? Okay, so this is an important result, and this is the second order correction to the energy. Okay, so okay, can we go to the next page now? Yes, ma'am. Okay. So we have done the second order correction for the energy. Now we're going to do the second order correction to the eigenfunction. Oh my God. To the eigenfunction psi n2. Okay, for this we multiply equation 17 by psi k 0, this is k, where k is not equal to n, and integrate over all space. So we get integral sigma m cnm2, and the energy bracket is em0 minus en0 psi k star 0 psi m 0 into d tau. So this is equal to integral psi k 0 sigma m star. Oh my God, this is too long, so I have to go down. So, or should I try to complete it here? Let's see. So en1 minus h1 psi m0 d tau plus en2 integral psi k0 psi n0
d tau. So all the terms on left hand side will be 0 except for m is equal to k. Also, the second term on right hand side goes off due to orthogonality. Okay. So we can write C N K. मैम हारिस कह रहे मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम है अच्छा कोई बात नहीं, I will upload it. ठीक है, minus EN0 is equal to sigma m prime CNM1 EN1 integral psi k star 0 psi m0 d tau minus sigma m prime. अच्छा इसको नीचे भी लिखा जा सकता है मेरा ख्याल. So let's go down minus sigma m prime CNM1 integral psi k0 h1 psi m0 d tau. Okay. So can we go to the next page now? मैम नहीं बस ये लास्ट 2 लाइंस रह गई मैम आप न्यू मीटिंग आईडी बता दें क्योंकि ये तो हाँ एंड होने वाली मीटिंग आईडी मैं आपको बताती हूँ. यस इतनी देर में आपको मीटिंग आईडी बता देती हूँ. Okay, I've sent the meeting ID on WhatsApp. ओके मैम अच्छा आपने लिख लिया है तो हम ना नई मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. बस मैम ये लास्ट टर्म लिखना ओके ओके मैम कर दें ओके.